Hello students, welcome back to my channel. Today we will be studying chapter 6 of external analysis, political and legal factors. I hope आपने मेरी पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा क्योंकि ताकि आपको आगे क्लैरिटी मिल सके for the next topics and chapters. Okay. So our first topic for today is political systems and government policies. Now, what is this? So this is set of institutional, political organization and interest groups and relationship between them and rules and norms that govern their functions. So इसका मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी कंट्री का या गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके जो नॉर्म्स और रूल्स होते हैं और उसके फंक्शन जो उसको गवर्न करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स को, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि वो कैसे एक बिजनेस को इफेक्ट करता है और कैसे एक बिजनेस इफेक्ट करता है और गवर्नमेंट को और उसकी वर्किंग्स को। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है लेवल 1, दैट इज ग्लोबल लेवल, जिसमें हमारे पास आता है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें आता है EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। ओके, फिर आता है हमारे पास सेकंड, दैट इज नेशनल। फिर हमारे पास आता है थर्ड, दैट इज लोकल। लोकल में हमारे पास आता है लोकल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंटल काउंसिल्स। ठीक है, सो हमारा ये एक बार इसका सिर्फ मीनिंग रीड कर लो बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये टॉपिक जो ये वाला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, इसके आते हैं सुप्रा नेशनल के। सो व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लीगल स्ट्रक्चर? इट इज ऑफ 3 टाइप्स बेसिकली। व्हाट आर इट्स टाइप्स? सुप्रानेशनल, नेशनल एंड रीजनल। सुप्रानेशनल का मतलब होता है इंटरनेशनल। सुप्रानेशनल का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल। ठीक है, कि जो भी इंटरनेशनल जो होता है, ठीक है, जैसे कि UN रेजोल्यूशंस, EU पार्लियामेंट मीन्स यूरोपियन पार्लियामेंट एंड EU कोड, दैट इज यूरोपियन कोड, देन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सारे आप एक बार इन सबको लर्न कर लो सुप्रानेशनल वालों को। नेशनल सिंपल है फ्रॉम इट्स नेम दैट इट इज सीनियर एंड अदर कोर्ट्स एंड national acts of parliament through the government, means everything that is not international and within the nation, so it comes under national. What is regional? Regional means local, it is limited up to your region, so that government only. Okay, means in your area. Next is government can affect an organization in basically 2 ways. These 2 ways are, one is government can affect your organization through its policy, another is through the direct legislation. Through direct legislation. Okay, so basically government can directly affect through laws, taxes, regulations, permits and subsidies. Indirectly, the government has influence on economy, infrastructure, education, political stability and trade relations. Okay, so failure to direct legislation. So what is the direct failure to the legalization of legislation of this? So it is weak enforcement or corruption and outdated laws, fines, corruption, red tapeism, bad publicity, loss of customers, closure and fines. Now risk क्या है इस चीज की? कि अनफेयर कंपटीशन है, रेपुटेशनल डैमेज है, अनसर्टेनिटी है और लीगल है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? डाटा सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा सिक्योरिटी? डाटा सिक्योरिटी मीन्स it is concerned with keeping the data safe from various hazards that could destroy or compromise it. Okay, so wait a minute. So compliance with data protection laws, that is GDPR, it secure processing, storage and access and control.
It includes various risks also, that is loss of trust, operation disruption, and fines. Next is our risk. Risk is basically physical risk, that is due to fire, theft, flood, power failure, unsafe premises, and the legal duties regarding this health, safety, insurance, and safe environment. Physical risk is due to mainly the environment in which we are operating. Okay. Human risk is that the from risk from a human, that is employer error, fraud, loss of key staff, poor training, and its responses are policies, training, background checks, and segregation of duties, that is separating the job roles properly to the employees. So this was all about a chapter 6 of ACCA Business and Technology. So let me summarize just quickly what we have learned. Okay, so this is chapter was 6, that was external analysis, and this was part 1 basically of external analysis. So it contains political and legal factors, that has political systems, which are set of political institutes and interest groups, and relation between them due to rules and norms that govern their functions. Then is government policy. Government policy क्या होता है? Government policy is rules and norms only, take care that affect the business organization. And we have this triangle जिसमें आपको बताया गया है सोर्सेस. सोर्सेस में आपके पास आता है बेसिकली सुप्रानेशनल कोर्ट, जिसमें आता है यूरोपियन कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूनियन resolutions. Then we have national, then we have regional. So this slide is important. Then failure of direct legislation were weak enforcement, corruption, and outdated laws. Then is data security, and then is physical risk, that is due to theft, fire, power failure, and unsafe premises. Then is human risk. So with this chapter is completed, and I hope you will like my lecture. And if you want more such lectures, just follow me and subscribe to my channel. And in case you have any doubt or any problem, just comment me down in the comment box. Thank you, and stay tuned. Thank you.